That's coming up in 2 minutes. Oh, keeping you on. वेलकम टू लंदन। और इस समय मैं हूँ कॉन्वेंट गार्डन एरिया में और यहाँ से फ्री टूर वॉकिंग टूर स्टार्ट होने वाला है, जो कि मैंने अपने हॉस्टल से लिया है। और टूर गाइड्स आपको वॉकिंग टूर देते हैं और आखिर में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं वो कि आप उन्हें कुछ टिप दें। तो अभी इस टूर की स्टार्ट होने वाला है अभी। तो देखते हैं क्या क्या पैलेसेस कवर करने वाले हैं। बकिंघम पैलेस इसमें कवर होगा, ये मुझे पता है। और फिर देखते हैं क्या क्या और चीज़ें कवर होगी, वो मैं आपको पूरी दिखाने की कोशिश करूँगा। Hello everyone and welcome to the Sound of Man's tour in London! Not here. Far away. I do that a lot in my tours and people looking around like, what the hell is he talking about? And all the way to the right, and I could see London completely in the panorama. It's massive. But in its very middle are two separate cities, and that massive conurbation is not actually a city, weirdly. But in its centre, there are two separate cities. One is the oldest part, it's called the Old City of London. It's about half a mile in that direction. Right next door to it is the second oldest bit, the city of Westminster. This is the... I'm from India. From India? Yeah. I don't think you can say just from India. Give us details. I'm from Jaipur, Rajasthan, India. Jaipur, yeah. One of my ex-girlfriends was from Madras. Ah, okay, it's so far from us. I know, but I've never been to India. In the south and we are on up. Yeah. But I really wanted to go. Uh-huh. And then I was probably with her for an extra 6 months. It wasn't going so well, but I was like, I could go to India. It managed to do it, so India's a big bugbear for me. Yeah. I won't forget those 6 months. They were hard. Go on. Buffalo, New York. Buffalo, New York. Okay, yes, like New York State. Yeah, I've been saying. I do. Hello. You can make me laugh when I wanna cry. तो इस समय मैं हूँ लंदन में ट्रैवलॉगर स्क्वायर पे, और ये पीछे हमारा ग्रुप है जो कि वॉकिंग टूर ले रहा है, और हमारे गाइड भाई साहब बता रहे हैं। और दिन अच्छा है, सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं। अराउंड 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेजेंट वेदर है। में बना हुआ ये राजमहल, जिसे बकिंघम पैलेस या बकिंघम हाउस कहते हैं, इंग्लैंड के लंदन के वेस्टमिंस्टर एरिया में ये स्थित है। और यहाँ आप ट्यूब से भी आ सकते हैं। नज़दीकी ट्यूब स्टेशन ग्रीन पार्क है, और यहाँ परेड सेरेमनी गार्ड चेंजिंग सेरेमनी होती है, जो कि सुबह हो जाती है 11 बजे। और वैसे ये पब्लिकली ओपन नहीं है अंदर जाने के लिए। ये 25 जुलाई से होगा इस साल में, और अभी है फरवरी, और फिर अक्टूबर में, अब अक्टूबर तक रहेगा पब्लिकली देखने के लिए। तो अभी आप ये यहाँ पे बाहर से ही नज़ारे ले सकते हैं इस पैलेस के। बहुत ही विशाल का ये पैलेस है। बिल्कुल अगर लंदन में आए तो यहाँ बिल्कुल आना चाहिए आपको। He died before it got finished off. But the next guy, and unfortunately that guy didn't have a son, so again, problematic. We got invaded by the French, it was all a big... But the guy who invaded us, he got crowned in here in 1066. His name was William, on Christmas Day. Every single king or queen of the country that has been crowned inside that place. There's an unbroken chain going back about 1,000 years now. You can imagine 2066, there's going to be big... Without you